Hello dear students or friends, welcome back to my channel Rahul English Study। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट 40 क्वेश्चंस जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी लेवल के हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज माई मदर, फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश, सो माई मदर, whom does Hamlet speak here? हैमलेट ने ये यहाँ पर किसके लिए कहा है? तो ये कहा है किंग क्लॉडियस, क्वीन जर्ट्रूड, ओफेलिया, पोलोनियस। किसके लिए कहा है? आंसर करेंगे इसका। तो इसका आंसर होगा किंग क्लॉडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी नो व्हाट वी आर, व्हाट नो नॉट, व्हाट बी मे बी, हु स्पीक्स, कौन कहता है? तो ये कहता है ओफिलिया। ओफिलिया का स्टेटमेंट ओफिलिया कहती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when sorrows come, they come not single spice but in battalion. Who is the speaker? इसमें स्पीकर कौन है? कौन कहने वाला है? कहने वाला कौन है? तो इसमें है किंग क्लॉडियस है। तो आंसर इज सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, हु स्पीक्स, आंसर करेंगे इसका। तो स्पीक्स किंग क्लॉडियस। Next question is for goodness growing to flourish dies in is one too much. Who utters these lines? Hamlet, Marsilio, Viola, King Claudius. What will be answer? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा, आंसर इज करेक्ट आंसर इज किंग क्लॉडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ गेट यू टू मे लेडीज चैम्बर एंड tell her, let her paint an inch thick. To his favor she must come. Make her laugh at that. Who speaks? Hamlet, Gravedigger, Jacques Touchstone. What will be answer? इसका आंसर क्या होगा? आंसर करेंगे इसका आंसर होगा हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देयर इज डिवाइनिटी दैट सेव्स आवर एम्स, हु सेज, ऐसा कौन कहता है? देयर इज डिवाइनिटी दैट सेव्स आवर एम्स, हु सेज? हैमलेट, होरेसियो, एंटोनी, ब्रूटस। व्हाट विल बी आंसर?
Answer is Hamlet. Question number 8. Oscric appears in The Tempest, Othello, King Henry IV, Part 1, Hamlet. Part will be answer. क्या आंसर होगा? Oscric appears in. The answer is Hamlet. Answer is Hamlet. Question number 9. Question number 9. Orsino in 12th Night is the Duke of. क्या होगा आंसर? मेसोपोटामिया, मैक्डोनिया, मालदा, माल्टा, Illyria. What will be answer? The answer is Illyria. Question number 10. Is it a word to hide virtues in? Who says? आंसर करेंगे. Is it a word to hide with virtues in? Who says? Answer is Sir Toby to Sir Andrew. Question number 11. Question number 11. Cesario is the name adopted by a character in discuss identity, him or her. What will be answer? Viola, Cleopatra, Rosalind, Viola. क्या होगा आंसर? यहाँ डबल ऑप्शन दिए हैं. आंसर इज वियोला. ऑप्शन डी इज करेक्ट. यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, ये और कोई ऑप्शन कर देते हैं. चलो 3 ही ऑप्शन रहते हैं, अगला देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट a bad marriage. This uttered by Feste. Name the play. प्ले का नेम बताना है. तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर करेंगे, इसका होगा 12th नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्फॉर्मिटी. Infirmity that decays the wise doth ever make the better fool. Who utters? Malvolio, Feste, Fabian, Sir Toby. What will be answer? The answer will be Malvolio. Next question. Next question is, oh, you are sick of self-love, Malvolio, and taste with distempered appetite. Who speaks this about Malvolio? Who speaks this about Malvolio? Viola, Portia, Olivia, none of these. What will be answer? The answer is Olivia. Question number next question है question number 15. Present mirth has present laughter. What is to come is still unsure. Who utters these lines? Who utter these lines? Feste, Fabian, Viola, Jacques. What will be answer? The answer will be Feste. Next question. Next question is, you say stuff will not endure
This is form of mouth of Feste, Fabian, Viola, Jacques. What will be answer? The answer will be Feste. Next question. Next question is 17. Next question is 17. Art any more than a steward dost thou think because thou art virtuous, there shall be no more cakes and alley. Who is the speaker? Who is the speaker? What will be answer? The answer will be Sir Toby. Option D is correct. Question number next. Next question is 18. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thirst open aim. Malvolio, the steward to Olivia, reads this in a letter forget by Maria. In which play does Malvolio appear? In which play does Malvolio appear? What will be answer? The answer will be 12th night. Answer will be 12th night. Next question. Next question is 19. The forget letter meant for Malvolio is signed as. What will be answer? The fortunate unhappy, the unfortunate happy, the fortunate happy, not signs, not sign. What will be answer? Question number 19 का आंसर करेंगे. क्या होगा आंसर? तो आंसर इज द फॉर्चुनेट एंड हैप्पी. ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. See the next question. Question number 20. If one would be prey, how much the better to fall before the lion than the wolf? Than the wolf. Who is the speaker? Olivia, Viola, Rosalind, Miranda. What will be answer? The answer will be Olivia. Option A is correct. Question number 21. Question number 21. Love shout is good, but given unshout is better. This is uttered by Olivia. To whom does she utter? Olivia, Portia, Beatrice, Viola. What will be answer? इसका आंसर करेंगे. क्या होगा आंसर? Viola. Answer is Viola. Option D is correct. Question number 22. Youth is bought more oft than begged or borrowed. Who speaks? Olivia, Portia, Rosalind, Maria. What will be answer? Answer is Olivia. Next question. Question number 23. Next question is I would not have him miscarry for the half of my dowry. Olivia utters this. For whom does the utter? Malvolio, Sir Toby, Caserio, Fabian. What will be answer? Sorry, Cesario. Question एक बार फिर से देखें. I would not have him miscarry for the half of my dowry. Olivia uttered this. For whom does she utter? Malvolio, Sir Toby, Cesario, Fabian. What will be answer? Answer is Malvolio. Option A is correct. Question number next देखेंगे 24. Question number 24. Nay, I am for all waters
This line is uttered by Feste. What does it mean? What does it mean? Option पढ़ लें. He can play any part, or it is fit for any part. He can swim in water. He may drink all kind of waters. He is ashamed. What will be answer? Answer is he can play any part or is fit for any part. Option A is correct. Question number 25. Question number 25. I'll sacrifice the lamb that I do love to spite a Raven heard within a dove. Who speaks these lines? Who speaks these lines? ऑप्शन देखें. ड्यूक ओरिसिनो, Sebastian, Olivia, none of these. What will be answer? The answer will be Duke Orsino. Next question 26. Next question 26. How have you made division of yourself and apple clapped into is not more twin than these two creatures? Which is Sebastian? Who is the speaker? Sebastian Senior, Feste, Sir Toby, Antonio. What will be answer? Antonio, what will be answer? Answer is Antonio. Option D is correct. Next question. Question number 27. I'll be revenged the whole pack of you who utter it. What will be answer? Feste, Malvolio, Maria, Fabian. What will be answer? Answer is Malvolio. Answer is Malvolio. Option B is correct. Next question. See the next question. Better a witty fool than a foolish wit who speaks. Feste, Malvolio, Jacques, Touchstone. What will be answer? आंसर करेंगे इसका. क्या करेंगे आंसर? इसका आंसर होगा फेस्टे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29. Who brings the message from Olivia's maid that Olivia's would mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years, and during that time nobody would be able to see her face? What will be answer? आंसर देखेंगे क्या होगा इसका आंसर. वैलेंटाइन, क्यूरियो, फेस्टे, सिजारियो. व्हाट विल बी आंसर? इसका आंसर होगा वैलेंटाइन. क्वेश्चन नंबर 30. I should kill thee with much caressing. Who says? Romeo and Juliet, Antony in Antony and Cleopatra in Antony and Cleopatra, Juliet and Romeo and Juliet. What will be answer? इसका आंसर करेंगे क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु इज दैट कैन टेल मी who I am? Who says? King Lear, Cordelia, Prospero, Duke Orsino. What will be answer?
आंसर इज किंग लियर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 32. The anger rises when the old doth fall. Who utters? Cordelia, Prospero, Duke, Orsino, Edmund. What will be answer? Answer is Edmund. Next question. Next question is, as flies to wanton wise, as flies to wanton wise, are we to the gods, they kill us for their sport. Who utters? आंसर करेंगे 33 का आंसर करेंगे ग्लूकेस्टर इन किंग लियर, किंग लियर इन किंग लियर, कॉर्डेलिया इन किंग लियर. नन ऑफ दिस. व्हाट विल बी आंसर? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. आंसर करें. क्या होगा आंसर? आंसर इज Gloucester, Gloucester in King Lear. Answer is A. Option A is correct. Question number, we are not the first. We are not the first who with best meaning have incurred the worst. Who utters? Cordelia, Viola, Beatrice, Rosalind. What will be answer? Answer is Cordelia. Option A is correct. Question number 35. Question number 35. To noble fortune, know this that men are as the time is to be tender minded, does not become a sword. Who utters? Duke Orsino, Edmund, Duke Orsino, Edmund, Feste, Mortimer. What will be answer? Mortimer, Mortimer. What will be answer? Answer is Edmund. Option B is correct. Question number 36. 36 का आंसर करेंगे. Do you see this? Look on her, her lips. Look there, look there. Who says? Lear, Cordelia, Maria, Antony. Lear means King's Lear. Lear, sorry, हाँ. Lear, हाँ. Lear, Cordelia, Maria, Antony. What will be answer? The answer is Lear. Option A is correct. Question number 37. A Midsummer Night Dream was to be performed on the night of Midsummer Day, June 24. It is St. John's Day, Epiphany Day, Venus Day, Valentine Day. What will be answer? आंसर करेंगे 37 का आंसर करेंगे. क्या होगा आंसर? आंसर इज सेंट जॉन्स डे. आंसर इज ऑप्शन इज करेक्ट. सेंट जॉन्स डे. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. See the question number 38. Answer this question. The marriage of his pair forms the setting of the story of a Midsummer Night Dream. इसका आंसर करेंगे. क्या होगा आंसर? ऑप्शन पढ़ें. Theseus and Hippolyta, Maria and Sir Toby,
रोजलैंड और ओरलैंडो होना चाहिए, ओरलैंडो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मिरिंडा एंड फ्रेनिंड, नहीं फर्डिनेंड। व्हाट विल बी आंसर? इसका आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? आंसर इज थीसियस एंड हिप्पोलाइटा, सॉरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द किंग ऑफ अफेयर्स इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम? ओबेरॉन, Ulysses, Mars, none of these. What will be answer? Answer is Oberon. Oberon, option A is correct. Question number 40 and last question. Mustard seed in a midsummer night's dream is a fairy, a boat, a witch, a plant. What will be answer? Answer is a fairy. Option A is correct. तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन थे जिन पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में इन्हीं अगले 40 क्वेश्चंस के साथ या 50 क्वेश्चंस के साथ, और ये हम कवर करेंगे इसको शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सारे कवर करेंगे। तो सर, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।